with our daily current affairs session for today. That is on 17 July. And without any delay, let's just begin our session. We have some very important news followed by some important questions which are relevant from your exam's perspective. And they are just based on our current affairs. Okay. So let's just begin. The first news today that we have is related to NIRF, which is the National Institutional Ranking Framework. तो ये एक बेसिकली फ्रेमवर्क है जिसमें जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको रैंक्स दी जाती है इन इंडिया. इसका जो रैंकिंग है वो 2020 के लिए अभी आया है. सो वी आर गोइंग टू सी दैट नाउ कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको ये रैंकिंग आई है, एंड टॉप कौन है, टॉप 5 में कौन है, एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, व्हाई डू वी हैव दिस NIRF. सो और ये कैसे वर्क करता है, व्हाट आर द पैरामीटर्स, ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर न्यूज. ओके. So, NIRF is a methodology adopted by the Ministry of Education. Very important. Which ministry? Ministry of Education. Okay. To rank institutions of higher education in India. Okay. So, ये एक methodology है. Okay. जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अडॉप्ट किया है हमारी कंट्री में, ताकि वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं हायर एजुकेशन के, उनको रैंक्स दे सके इन द कंट्री. इट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2015 बाय द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो ये कब लॉन्च हुआ था? फर्स्ट टाइम 2015 में लॉन्च हुआ था, और मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया. It is prepared as an annual report card on the performance of the higher educational institutions in India. तो ये annually report बनाई जाती है इसकी, and annually ranking जो है वो on the basis of the performance of the higher educational institutes ये दिए जाते. Okay. NIRF ranks education institutions under various categories like universities, medical, law, engineering, management, overall, etc. तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज रहती है कि यूनिवर्सिटीज में व्हाट आर दी रैंक्स, देन मेडिकल में व्हाट आर दी रैंक्स, लॉ में क्या है, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, और ओवरऑल. ओके. सो ओवरऑल एज यू कैन सी फ्रॉम द headline. So IITM it is for Madras. Okay. ये कंट्री का टॉप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है. Okay. So what are the parameters? So it mainly uses 5 key parameters to assess education institutions they are. So 5 parameters हैं. What are they? Teaching, learning and resources. This is the first parameter. Teaching, learning and resources. कैसी teaching है, learning effectively हो रही है या नहीं, resources, infrastructure है या नहीं. The second is research and professional practice. Research का क्या status है, कितने लोग actually research में involved हैं, जैसे PhD हो गया, post doctoral हो गया, all those things. And उनका level also, what is the level? Then graduation outcome क्या है, outreach and inclusivity क्या है, peer perception क्या है. Okay, so that is also important. Okay, so these 5 are the parameters on which the assessment takes place. Now, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के स्पेसिफिक कुछ बात कर लेते हैं. ठीक है. Excuse me. NIRF 2022 is the 7th edition of the National Institutional Ranking Framework. So ये 7th है. Okay. It started in 15.
about 4,786 institutions were evaluated based on these 5 key parameters. So वो जो पहले हमने 5 key parameters देखे, उनके बेसिस पर ही 4,786 institutions को evaluate किया गया. The Indian Institute of Technology, Madras, was ranked as the top higher educational institute in India, which was followed by Indian Institute of Science, Bangalore, and IIT Bombay. तो ये बड़ा important line हो गया, ठीक है. नंबर 1 पे कौन है ओवरऑल में? टॉप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सबसे पहले we have IIT Madras, followed by IISc Bangalore, and then followed by IIT Mumbai. The education minister, while launching the NIRF 2022, said that accreditation and assessment of every higher education institution will be made compulsory, and all the institutions must be a part of the NIRF ranking system. So while launching this NIRF ranking जो है इस साल की, एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला कि ये बहुत ही कंपलसरी है और हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कंपलसरीली NIRF रैंकिंग का सिस्टम का पार्ट बनना होगा. Further, he announced that the 2 current accreditation systems, namely NEC and NBA, will be merged, and institutes must have either NEC accreditation or NIRF ranking in order to get government funding. Then what did he say? कि जो NEC है और NBA है, इनको मर्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि either they have to be part of NEC accreditation या फिर NIRF रैंकिंग का, अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड चाहिए तो. Okay. He also added that there will be a system for accreditation of schools in the country along similar lines to NIRF. There is also work going on ranking of ITIs and polytechnics. What also he said, the country में NIRF जैसा ही एक सिस्टम बनाया जाएगा जो कि स्कूल्स जो है उनको रैंक देगा. एंड ऐसा भी काम चल रहा है जिसमें जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं एंड ITIs हैं उनकी रैंकिंग का भी उनकी रैंकिंग पर भी वर्क करने के लिए ऐसा प्रोसेस चल रहा है. Okay, so then I have brought these top 5 list for you people. देख लेते हैं जल्दी से. What is the 2022 ranking overall में? So there here we have the category, then we have the top ranked institution. So top 5 I have brought for you. Overall में we have, as I told you, IIT Madras, then we have IISc Bangalore, then IIT Bombay, IIT Delhi, then IIT Kanpur. Sorry. Top universities: IISc Bangalore, JNU, Jamia Millia, Jadavpur University, Amrita Vishwa Vidyapith. Then we have this medical में then what are the 5? सबसे पहले एम्स है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, then Christian Medical College Vellore, then National Institute of Mental Health and Neuroscience Bangalore, then BHU. उसके बाद मैनेजमेंट में we have IIM अहमदाबाद सबसे पहले, then IIM Bangalore, then IIM कोलकाता, IIT Delhi, IIM कोझिकोड. ठीक है, याद थोड़ा देख लेना, मतलब ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट कीप हैविंग अ लुक ऑन दिस, सो आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा. ओके,
Then what are the colleges in top 5? Miranda House, Hindustan College, sorry, Hindu College, Presidency College, Loyola College, Lady Shri Ram College for Women. So these are the top 5 in all the categories: overall, universities, medical, management, and college. Okay. Now, actually, this NIRF is the first ever effort made by the government of India to rank higher education institutions in the country, and is playing a pivotal role in ensuring that the education institutions are undertaking necessary measures to better their ranking, which in turn is contributing towards making India's education institutions globally competitive. So NIRF ranking India का first most important ये ऐसा ranking का system आया, इससे पहले कोई नहीं था. So Indian government का ये पहला ऐसा ranking system है for higher educational institute. एंड ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो लेवल है एजुकेशन का उसको बढ़ाने में एंड मेंटेन करने में, क्योंकि इससे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है विद इन द कंट्री उनके बीच में एक कंपटीशन रहता है एंड दे स्ट्राइव टू डू बेटर, टू हैव अ बेटर रैंक. So that is why NIRF is playing a very important role in making our education ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, ग्लोबल लेवल पे हम कहीं स्टैंड कर सके, इसमें ये बड़ा ही हेल्प करेगा हम लोग. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. आई थिंक यू पीपल मस्ट keep a screenshot of this one so that it will be helpful for you. You can just kindly look at it at times. Okay, so with this we have come to an end to that particular news, and now we have another news. So this article talks about the growing network of online hate speech and trolling against the established institutions like judiciary and journalism. So this article is basically about the hate speech. उससे रिलेटेड जो नेटवर्क्स है जिनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि कैसे ये जो हेट स्पीच है ये वेल स्टेब्लिश जो हमारे सिस्टम्स है जैसे जुडिशरी जर्नलिज्म, इसके बारे में गलत बातें की जाती है. नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स हेट स्पीच एंड ट्रोलिंग? Hate speech basically is any kind of speech, behavior, or written or writing which is intended to attack or harm, particularly discrimination, hostility, or violence based upon someone's religion, ethnicity, race, color, gender, or other factor. ठीक है? So hate speech क्या है? या तो कोई स्पीच, कुछ लिखा हुआ, कुछ बिहेवियर जो कि जिसकी इंटेंशन है कि किसी दूसरे बंदे की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का. ठीक है, चाहे वो उनके रिलीजन के बेसिस पे हो, उनकी एथनिसिटी, रेस के, कलर पे, जेंडर के बेसिस पे हो, या किसी भी अदर फैक्टर के बेसिस पे हो. हेट स्पीच रिलाइज ऑन टेंशंस which it strives to reproduce and amplify. अब हेट स्पीच जो है वो टेंशन पे एक्चुअली निर्भर भी करती है एंड कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने की और उसको रिप्रोड्यूस करने. when obviously when you are having argument with someone, when you are telling somebody bad about themselves कि उनका जो रिलीजन है ये ऐसा है वैसा है, या वो जिस कॉम्प्लेक्शन के हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या उनका जो जेंडर है वो ऐसा है, वुमेन कैन नॉट डू दिस एंड दैट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स, देन ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ टेंशन अमंग द पीपल, राइट? A troll is interested, or troll is internet slang for a person who intentionally tries to provoke conflict, hostility, or arguments in an online social community. और ट्रोल क्या होता है?
ट्रोल बेसिकली एक स्लैंग है जो इंटरनेट पे यूज काफी होता है, जिसमें कि कोई पर्सन जो है वो इंटेंशनली किसी को प्रोवोक करने की, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आने की कोशिश करता है इन ऑनलाइन मोड, सोशल मीडिया वगैरह पे। जैसे कि हमने बहुत बार देखा है, जितने भी सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, so when they are writing something, then when they are putting some pictures, so उनको बहुत ही कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ ट्रोलिंग्स भी आती है, बुरे कमेंट्स आ जाते हैं। एंड सिमिलर विद मेनी अदर पीपल, जैसे कोई मैच हुआ, ठीक है, एंड द क्रिकेटर्स कुड नॉट डू वेल, तो फिर उनको ट्रोल किया जाएगा, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम ट्रोलिंग के देख सकते हैं। Trolls often use inflammatory messaging to provoke emotional responses out of people, disrupting otherwise civil discussions. So ये जो trolls होते हैं, ये बहुत ही वायलेंट मैसेजेस का यूज करते हैं ताकि वो दूसरे इंसान के इमोशंस को प्रोवोक कर सके, कि वो इंसान गुस्से में आके उनको कुछ रिस्पॉन्स करे. So all that. Okay. Now trolling can occur anywhere that has an open area where people can freely post their thoughts and opinions. And trolling की कोई specific जगह नहीं है, ओपनली हो सकता है जहाँ पे लोग फ्रीली अपनी बात कह सके, रख सके. एंड आज का जमाना तो ऐसा ही है. So लोग दूसरे को ट्रोल करने में भी सोचते हैं कि उनका राइट है, which is actually not right. Your freedom is your freedom until or unless you are not hurting anybody else's freedom. आप किसी और को डिस्टर्ब कर रहे हो, किसी और को परेशान कर रहे हो, that is not your freedom, right? Okay. Now, what are the provisions on hate speech in the Indian Constitution? India prohibits hate speech through various sections of Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedures, and other laws which put limitations on the freedom of expression. So freedom of speech, we have this article in our constitution which actually gives the fundamental right to all of us, but कई बार उसका misuse होता है because लोग फिर भूल जाते हैं that what they are saying. Freedom of speech होना is good, but we need to have certain reasonable restrictions for that. Okay. So India actually prohibit करता है ऐसे जो hate speeches होते हैं उनको through various sections of Indian Penal Code. Okay. Constitutionally, Article 19 gives all citizens the right to freedom of speech and expression, but the said freedom of expression, give me a minute, just a minute. But the said freedom of expression is subject to reasonable restrictions. जैसे कि मैंने अभी बोला था. There are reasonable restrictions to free speech when it looks likely to spiral into violence. What a 1989 Supreme Court judgment called a spark in a powder cake situation. So, ऐसे restrictions, मतलब obviously we all have freedom of speech and expression, and India is one of those countries जहाँ पे हम काफी we have this concept of, actually we have this concept of freely expressing ourselves, having freedom, liberty, all that. So हम actually काफी lucky है to be part of this country. At least I feel this. So actually उस पे but कुछ reasonable restrictions लगाए जाते हैं जब ऐसा लगे कि कुछ violence erupt हो सकती on this particular Article 19. Sections
1538, 153B, 295A, 298, 505 of Indian Penal Code 1860 deal with speech or words that could create mischief, outrage, religious belief, or cause imputations of national integrity. So ये जो सारे sections हैं इंडियन पिनल कोड 1860 उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बताए हैं, कुछ स्पीचेस बताए हैं जिससे कि एक्चुअली कुछ भयंकर वायलेंस क्रिएट हो सकती है जो कि किसी के रिलीजियस बिलीफ को या अदर चीज को, सेंटिमेंट्स को, इंटीग्रिटी को हर्ट कर सकते हैं. The Law Commission has proposed that separate offences be added to the IPC to criminalize hate speech quite specifically instead of being subsumed in the existing sections concerning inflammatory acts and speeches. So ये जो लॉ कमीशन है इसने मतलब एक मांग की है कि एक सेपरेट ऑफेंसेस ऐड हो जाने चाहिए इन आईपीसी ताकि जो हेट स्पीच है उसको स्पेसिफिक केसेस में इट शुड बी क्रिमिनलाइज. अगर किसी ने ऐसा किया है तो फिर उसका जो एक्ट है वो क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा एंड फिर सजा मिलेगी. It has proposed that two new sanctions, Section 153C and Section 505A, be added. Okay. Now, extent of judicial interference on hate speech. Let's just see what is the role of judicial interference. The duty to curb hate speech and ensure justice largely falls on the shoulders of the higher judiciary. Okay. However, the reactions, give me a second. However, the reactions of courts to meet this challenge has been mixed. कि वो ये हेट स्पीच को खत्म करना और जस्टिस को इंश्योर करना ये हायर जुडिशरी के अंडर आता है, बट जो कोर्ट है इसका रिएक्शन इस पे मिक्स रहता है. On the spread of hate speech, the apex court pointed out that the main cause of the problem is not the lack of the laws, but rather a lack of their effective execution. और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनका ये मानना है कि ये जो हेट स्पीच का जो इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, इतना ज्यादा ये होते हैं इंसिडेंट्स हेट स्पीच के, उसका मेन रीजन ये नहीं है कि हमारे यहाँ लॉज की कमी है. उसका मेन रीजन ये है कि जो लॉज है उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है. Therefore, the executive as well as civil society has to perform its role in enforcing the already existing legal regime. So they are saying कि in such cases क्या करना पड़ेगा कि ये जो already existing law है, जो पहले से ही हमारे यहाँ law है related to this problem hate speech से, उनको अच्छे से execute करना पड़ेगा. ठीक है. Chief Justice of India N.M. Ramana stressed that it is imperative to start a discourse as to how social media trends can affect institutions. Okay? The Indian Constitution seeks to prevent the delivery of hate speech under the guise of free speech and expression. It prohibits expressions that can be insulting to others under the provisions of reasonable restrictions. So, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली प्रिवेंट करता है, इट सीक्स टू प्रिवेंट हेट स्पीच, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर दैट, एंड इट आल्सो प्रोहिबिट्स एक्सप्रेशन जो कि दूसरे के लिए इंसल्टिंग हो सकते हैं. ओके. The fundamental duty under Article 51A
H insists that citizens must develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. Several factors are to be considered when restricting speeches, like the number of strong opinions, offensive to certain communities, and the effect on the values of dignity, liberty, and equality. तो जब restrictions की बात हो speeches पे, तो बहुत सारे factors को consider करना is important. जैसे क्या लोगों की ओपिनियन, कितना ऑफेंसिव है वो सर्टेन कम्युनिटी के लिए, एंड उसका इफेक्ट क्या है डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी वैल्यूज पर. The Supreme Court in A.M. Mathur versus Pramod Kumar Gupta 1990 case opined that judges should not use strong and carping language while criticizing the conduct of parties or their witnesses. They must act with sobriety, moderation, and restriction. So, in this particular case, even the Supreme Court had this opinion. जो judges हैं, उनको भी सही तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए when they are criticizing the parties. Okay, so with this, we have come to an end to this particular news also. Now let's move to the another news for today. Okay, so this news is important because Kerala has reports India's first monkeypox case. Okay, so what is monkeypox disease? जल्दी से एक बार देख लेते हैं. Monkeypox is a viral zoonotic disease. Zoonotic disease की मतलब एक ऐसा disease जो कि एनिमल के कॉन्टेक्ट से स्प्रेड हुआ है. Monkeypox disease is associated with symptoms that were similar to those seen in smallpox patients, but it is clinically less severe. So monkeypox जो disease है, उसके जो symptoms है, they are similar to the symptoms of smallpox, but clinically ये थोड़ा कम severe या harmful होता है as compared to smallpox. Various animal species have been identified as hosts of the monkeypox virus, such as rock squirrels, tree squirrel, Gambian posh rat, dormice, non-human primates, and other species. So, बहुत सारी animal species हैं जो कि होस्ट है monkeypox वायरस की, जो मैंने आपको अभी गिना दिए. Monkeypox was first identified in human in 1970 in the Democratic Republic of the Congo and had primarily occurred in Central and West African countries. So primarily कब हुआ था सबसे पहले? It happened in 1970 in Republic of Congo, and ये सबसे पहले सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में आया था. सो इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिया में पहला केस हुआ है इसका. यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर इमेज में दैट यू कैन ऑल्सो सी. कैसे हो सकता है? फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो, रैशेस का, बॉडी फ्लूइड का, क्लोज कॉन्टेक्ट हो, 4 hours से ज्यादा तो हो सकता है. ओके, symptoms and all that you can see in this particular image. Now with this, let's move to another news for today. Okay, so this news is related to that to the topic of Iran and Belarus are likely to be the 2 newest additions to the Shanghai Cooperation Organization grouping, which had China, Russia, and 4 Central Asian states, namely Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan as founding members. ठीक है, तो ये जो लाइन हो गई, ये पूरा जो पैराग्राफ हो गया बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया. इसमें 2-3 इंफॉर्मेशन आ गई. कौन कौन सी नई 2
कंट्री है ईरान एंड बेलारूस। और कौन कौन सी फाउंडिंग कंट्रीज है वो आपने देख लिया। इंडिया फाउंडिंग कंट्रीज में नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंट द ग्रुप इन 2017। ठीक है। नाउ अच्छा, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी, पर पहले हम न्यूज। ठीक है। The significance of this round of expansion is that it shows that Shanghai Cooperation Organization has been extending its international influence and there is a wide acceptance of the principles of SCO. Okay. तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है ऑफ शंघाई कोऑपरेशन की वो बढ़ रही है और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वाइडली एक्सेप्टेड किया जा रहा है। Experts point out that China and Russia, after Russia's invasion of Ukraine, are trying to frame the grouping as a counter to the West-dominated NATO. So, experts का ये मानना है कि चाइना और रशिया, जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया उसके बाद से कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ग्रुपिंग फ्रेम करें जो कि काउंटर हो नाटो को। So India is expected to host the SEO summit in 2023, very important. And Varanasi has been selected as the SEO region's first tourism and cultural capital, very important. So 2023 में जब इंडिया में होस्ट होगा SEO summit, तो बनारस में ये होगा होस्ट और वहां पे इनकी मीटिंग होगी और ये ठीक है। नहीं देख लो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो लाइन है। ओके, अब कोई के देख लेते हैं कि एक्चुअली जो शंघाई कोऑपरेशन है वो क्या। ठीक है। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, shortly known as SCO. The Shanghai Cooperation Organization is a permanent international intergovernmental organization. Okay. The creation of the Shanghai Cooperation Organization was announced in 2001 June in Shanghai, which is in China, by the Republic of Kazakhstan, the People's Republic of China, Kyrgyz Republic, the Republic of Uzbekistan, the Russian Federation, and the Republic of Tajikistan. So ये एक परमानेंट इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये सारी कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। In the historical meeting of the heads of State Council of the Shanghai Cooperation Organization held in June 2017 in Astana, the status of a full member of the organization was granted to the Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan in the meeting. So 2017 में जून में जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया एंड पाकिस्तान को फुल मेंबर का लेवल दिया गया था, स्टेटस दिया गया। Now, what are the main goals of Shanghai Cooperation Organization? Strengthening mutual trust and neighbor lines among the members state. So जो भी member states हैं, जो भी countries involved हैं, उनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो डेवलप कर, to protect their effective cooperation in trade, politics, research, economy, technology and culture. और एक दूसरे को कोऑपरेशन देना in trade, politics, research, economy, technology and culture. Education, transport, energy, environmental protection, tourism and other areas. इन areas पे भी work करेंगे, education पे, transport पे, energy पे. Making joint efforts to maintain and ensure security, stability and peace in region. Joint efforts करना, stability को, security को, peace को
रीजन में मेंटेन रखने के लिए। मूविंग टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, रैशनल एंड फेयर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमीज एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि ऐसे रास्ते की तरफ जाना कि जो डेमोक्रेसी है, रैशनैलिटी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसको वेल स्टेब्लिश करने की तरफ जाना, ऐसे एम्स। The organization pursues its internal policy based on the principles of mutual benefits, mutual trust, mutual consultation, equality, respect for cultural diversity, and a desire for common development, while the external policy is conducted under the principle of non-targeting and non-alignment. Important है ये दोनों, ठीक है? This is actually self-explainable, so I'm not dragging this particular point here. Okay, so with this we have come to an end to our daily news for today. Quickly एक बार आपको recap करवा देती हूँ छोटा सा, उसके बाद हम फटाफट से हमारे जो न्यूज है उन पे जाएंगे, सॉरी जो क्वेश्चंस हैं उन पे जाएंगे। पहले हमने देखा NIRF रैंकिंग आई है 2022 की, पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, इससे क्या फायदे होते हैं, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, ओवरऑल ये सब किसको मिला है वो देखा हमने। NIRF के फायदे क्या है, क्योंकि हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाता है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, तो ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने एक आर्टिकल देखा जो हेट स्पीच से रिलेटेड था, कि व्हाट इज एक्चुअली हेट स्पीच एंड ट्रोलिंग, क्या प्रोविजंस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड टू हेट स्पीच, जुडिशियरी का क्या रोल है इन दिस। उसके बाद हमारे नेक्स्ट न्यूज आई विच इज रिलेटेड टू द डिजीज ऑफ मंकी पॉक्स, कि मंकी पॉक्स डिजीज है वो कैसे होती है, क्या लक्षण है, केरला में इसका फर्स्ट केस आया है, that is why this is in the news. Then the next news that we had was related to Shanghai Cooperation Organization, कि जो ईरान और बेलारूस है वो उसके मेंबर्स बनने वाले हैं, न्यूएस्ट 2 मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमने पूरा देखा कि 2023 का जो SCO समिट होगा वो इंडिया में होगा, बनारस में। और फिर हमने थोड़ा जानने की कोशिश की कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो है क्या, इंडिया इसका कब मेंबर बना और इसके गोल्स क्या। ठीक है, नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चंस व्हिच आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। लेट्स ट्राई टू रीड एंड फाइंड द आंसर। Which union minister implements the mission Shakti scheme? So कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है दिस मिशन शक्ति? Option A, Ministry of Women and Child Development, B, Ministry of Defense, C, Ministry of External Affairs, D, Ministry of MSME, Micro, Small, Medium Enterprises, Ministry of MSME. Okay, I think this you will be able to answer Mission Shakti. So Shakti is related to, अगर आपको नहीं भी पता है, then you can have a logical understanding and then you can try to answer this one. Okay, so the answer is Ministry of Women and Child Development. अब जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें आती है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन से वो भी समझ लेते हैं। Ministry of Women and Child Development has issued detailed guideline for Mission Shakti scheme. This Mission Shakti was launched as an integrated women empowerment program as umbrella scheme for the safety, security and empowerment of women for implementation during 15th Finance Commission period 2021-22 to 2025-26. Mission Shakti has 2 sub-schemes, Sambal and Samarthya. This is very important. इसके अंदर 2 स्कीम आती है, संभाल and Samarthya. A new component of Nari Adalat's Women's Court to facilitate alternative dispute resolution was also announced. So, बहुत important हो गया ये.
इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? 15 फाइनेंशियल कमीशन से होगा। पीरियड क्या होगा? 2015 से पूरा 2021 से 2026 तक। और इसके 2 सब स्कीम है, ठीक है। और इसके अलावा नारी अदालत का भी अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसमें हमने और भी बहुत सारी चीजें जानी। Okay, so with this we move to the next question for today, which is a rebate of state and central taxes and levies scheme is associated with which union ministry? So options are Ministry of External Affairs, Ministry of MSME, Ministry of Commerce and Industry, then Ministry of Finance. So you have 4 options in front of you. Which one will be correct? You have to just tell me that. What do you feel? Which one will be the correct option? Okay, so Ministry of Commerce and Industry. अब समझने की कोशिश करते हैं. The Ministry of Commerce and Industry authorized the continuation of the scheme of rebate of state center taxes and levies with the same rates as announced by the Ministry of Textiles for exports of apparel and made-ups until March 31, 2024. This aims to increase export and generate employment in the textile industry. So this is important. Textile industry में export and employment generate करने के लिए ये बना गया है. Okay, so with this, we have come to an end for our daily current affairs for today. And I'll meet you tomorrow with another session on our daily current affairs, followed by important current affairs questions. Till then, keep studying, keep working hard. I'll see you soon in the next session. Thank you so much, everyone.